Hello and welcome to the Glad Possible YouTube channel. Today we will be discussing about this entire political drama in the Indian state of Maharashtra. For some of you who have been very regular with reading the newspaper, this is not something which is new. But for others who haven't picked up the newspaper yet, well, this is something that has been happening for a very long time now, over 2 years. And very recently, the Speaker of the Maharashtra State Legislative Assembly, Mr. Rahul Navekar, has given a decision with respect to which is the real Shiv Sena. And he has said that the Eknath Shinde faction is the real Shiv Sena. Now, so let's try to understand what this entire video is all about. So, the very first thing that I'd like to talk about is a split. Now, there are two things, guys. एक तो हो गया, after getting elected, I join another party, right? Now, split is not this at all. The second thing is, there are, let's say, five members of Party A which have been elected in the, let's say, Maharashtra State Legislative Assembly. Now, out of this, two of these people, they feel कि ये जो बाकी तीन है, they are not, um, they are not abiding by the actual ideals of this particular party A. They're going against it, and they are not complying with the rules and regulations of our party. And so, hence, this is what is known as a split, right? Now, both of them, both these factions, this faction also considers itself the real political party, and this one also says that no, no, we are the real deal. Now, in such a case, of course, the very first thing that comes to mind is that who gets the party symbol, right? अब ये पार्टी सिंबल इस इंसान को मिलना चाहिए, इन दो को मिलना चाहिए कि इन तीनों को मिलना चाहिए, एंड मिलना किस बेसिस पे चाहिए एंड कौन डिसाइड करेगा? तो कौन डिसाइड करेगा हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द सिंबल्स ऑर्डर ऑफ 1968. इट इज नन अदर देन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, which is a constitutional body under Article 324, right? तो दो टाइप की अब डिसीजन तो यही ले लेंगे आफ्टर लुकिंग एट ऑल द सर्कमस्टांसेस, द अवेलेबल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड हियरिंग बोथ द साइड्स, दे विल टेक द डिसीजन एंड सच अ डिसीजन शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द सेक्शंस. अच्छा, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की भी बात करें तो नॉट एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. मुझे to stand for elections, it is not mandatory to be a registered political party. However, it is always advisable, because as a registered political party, one gets a lot of merits, a lot of advantages. Now, after becoming a registered political party, the party can either be a recognized party or it can be an unrecognized party. Recognition is on the basis of the performance of the political party in the previous elections, right? And such terms and conditions have already been laid out in the Representation of People's Act 1951. तो हर एक पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होती और हर एक रजिस्टर्ड पार्टी रिकग्नाइज नहीं होती. ठीक है, रिकग्नाइज एट द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल. तो यही सिंबल्स ऑर्डर ऑफ 1968 बोलता है कि अगर कोई ऐसी पार्टी है जो रजिस्टर्ड है लेकिन अनरिकग्नाइज्ड है, तो उसमें यूजुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल देता है उन इन मेंबर्स को हु हैव स्प्लिट अप कि try to resolve your differences. You've anyway not been doing really well in elections. अगर तुम और भी अपनी स्ट्रेंथ कम कर लोगे तो फिर तो तुम्हारा कुछ रहेगा ही नहीं. So you see, it's different for different. So for a recognized political party, ECI looks at the terms and conditions, the circumstances, and then takes a decision which is binding. For an unrecognized political party, it is usually told to the party कि भाई अपने resolve your differences amicably. Now, the party that we are talking about, the name of the party is Shiv Sena. The state that we are talking about is Maharashtra. This is the symbol that I was talking about, the bow and arrow symbol. And these are the two factions or the split, right? So, the gentleman towards the left is Mr. Eknath Shinde, who is the current Chief Minister of Maharashtra. And the man towards the right is Uddhav Thackeray, who used to be the Chief Minister of Maharashtra. So to give you a little bit basic idea as to ये क्यों शुरू हुआ, तो सबसे पहले तो अगर हम बोले in the year 2019, Uddhav Thackeray was sworn in as the Chief Minister of Maharashtra.
Now, what happened later on was that Mr. Eknath Shinde, who was also a part of Shiv Sena, he was the leader of Shiv Sena in the Legislative Assembly. He sort of felt that Uddhav Thackeray and his entire group, his faction, is not complying with the belief system of the party, that is Shiv Sena. Their belief system's completely opposite to that. And so, hence, he, Eknath Shinde, and a lot of other MLAs along with him, they sort of went missing. And so, when I say went missing, they went to Surat, then they went to Guwahati, and they basically just kept saying this again and again that, we don't think they are the real Shiv Sena, we are the real Shiv Sena. Or in the language of the Indian polity, there seemed to have been a split in the party. Now, the minute that had happened, Mr. Uddhav Thackeray, he went to the Supreme Court and he said that, I want to start disqualification proceedings against Eknath Shinde and his rebel group. Because of which Mr. Eknath Shinde also moved to the Supreme Court and he sort of said that, there shouldn't be any disqualification proceedings against us because of the fact that there is no defection that has happened. Now, what is defection? We'll just understand in 2 minutes. ठीक है. अब हुआ क्या कि the governor at that time was Mr. Bhagat Singh Koshyari. So Mr. Bhagat Singh Koshyari, in very simple language, he came and told Uddhav Thackeray, he says, listen, you are the chief minister. Your own party members are saying that, you are not the real Shiv Sena and they are. So what you should do is you should perform a floor test. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि जब एक लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, जो इस केस में, क्योंकि राज्य सरकार की बात हो रही है, तो इस केस में चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सामने जाता है, बोलता है, डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन मी एंड माय गवर्नमेंट. सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो एक सिंपल मेजोरिटी पास कर दे तो तो कहा जाता है कि द फ्लोर टेस्ट हैज पास्ड एंड द गवर्नमेंट शैल रिमेन. एंड अगर बाय चांस सिंपल मेजोरिटी पास नहीं होती, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. Is so if more than 50% of the members present and voting, they do not, I mean, that is not passed, if the simple majority is not passed, then we say that the floor test has failed and the concerned chief minister must resign. अब फ्लोर टेस्ट होने के पहले ही उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया एंड वॉलंटरली रिजाइन कर दिया बिकॉज ही वाज सॉर्ट ऑफ वेरी मे बी इरिटेटेड एट दिस कि ये क्या हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स देन if he resigned from his post, then the next guy to get it was Mr. Eknath Shinde. He became the chief minister. The minute he became the chief minister, the next question was, ये bow and arrow का symbol किसको मिलना चाहिए? Should it go to the Uddhav Thackeray faction, or should it remain with or should it go, sorry, to the Eknath Shinde faction? And the Election Commission of India gave it to Eknath Shinde and his group. So the next thing is anti-defection law, and guys, we are not going to go into the absolute detail of anti-defection law, but I will, however, tell you the ideology behind it, reason. हम ये already class में करते ही हैं, हमें आता है, I hope हमें आता है, but yes, थोड़ा बहुत तो of course I will tell you about it. The logic behind the anti-defection law that came by virtue of the 52nd Amendment Act of 1985 was that, when a candidate is utilizing the platform provided to that candidate by a political party and the candidate wins the elections, then going against that party or joining another party seems like a very disloyal move. ये डिसलॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी के साथ नहीं है जिसके प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके वो इंसान जीता है इलेक्शंस. ये डिसलॉयल्टी इज ऑल्सो टूवर्ड्स द वोटर्स, जिन्होंने जब वोट किया तो तुमने एक परसेप्शन दिखाया कि तुम इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट हो, तो वोटर्स ने उसी हिसाब से आपको वोट किया, आप जीत भी गए. उसके बाद आपने जाके किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया. तो इन अ वे आप एक डेमोक्रेसी में वोटर्स को से उनके डिसीजन मेकिंग पावर की क्षमता छीन रहे हो. क्या पता कि अगर आप पहले उस पॉलिटिकल पार्टी का ही पार्ट बनते जिसका अभी आप पार्ट बन चुके हो, मे बी द वोटर्स वुडंट हैव वोटेड फॉर यू. सो यू आर सॉर्ट ऑफ disregarding the voters choice.
So this law, the anti-defection law, which is a set of guidelines, set of disqualifications for the members of the legislature, this law values the voter's choice and it maintains the sanctity of free and fair elections, at least it tries to. ठीक है. और इसमें क्या है कि अगर मेरी एक्चुअली तो अगर हम बात करें तो 10th शेड्यूल में विच वाज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है. It has been divided into many categories. So there are certain disqualification criteria for an elected member. One is there for an independent member. There is something for nominated members. So I'm not getting into that, right? Maybe we'll make another topic video for the same, if in case you guys need it. But otherwise, we have done it plenty of times in the classroom. So I hope you know it. राइट. पॉइंट इज दैट इज व्हाट इज द 10 शेड्यूल बनाया क्यों? क्योंकि एक इंसान था मिस्टर गयालाल, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, इन 1967 ही वाज अ हरियाणा बेस्ड एमएलए एंड ही सॉर्ट ऑफ चेंज्ड हिज पार्टी 3 times इन द सिंगल डे यार. मतलब व्हाई वुड समबडी डू दैट? बड़ी सिंपल सा मैथ है. अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, मेरी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी होनी चाहिए. लार्जेस्ट पार्टी के लिए मुझे ज़्यादा जनता चाहिए जो इलेक्टेड हो. अब मैं उनको क्या करूँगी ल्योर करने के लिए? आइदर आई गिव दैट पर्सन सम मनी विच अगेन इज इलीगल, और आई टेल दैट पर्सन अरे चलो बिकम अ मेंबर ऑफ माई पार्टी, मैं तुम्हें मिनिस्टर बना दूंगी, विच इज़ नॉट इलीगल बट देर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर्स, वो अलग बात है. Right, so that is what this guy did, and so hence this kind of a thing sort of destabilizes governments, and Maharashtra is an example of the same, right? So that is what it is. Now the next question is कि क्या जब split होता है, मतलब मैंने अभी तक आपको ये बोला कि एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी में चला गया है ना, तो दैट इज डिफेक्शन. डिसीजन कौन लेता है? स्पीकर. क्योंकि मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रही हूँ, है ना. लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर. स्पीकर टेक्स द डिसीजन. ऐसी राज्यसभा में एट द यूनियन लेवल चेयरमैन विल टेक द डिसीजन. सो in March 2023, our Chief Justice of India has very, very clearly said that anti-defection law applies even if a faction splits from a party. He was basically trying to say that, listen, even if you vote against your party or you abstain from voting for your political party, that is also a criteria of disqualification under the 10th schedule. So it doesn't matter whether your faction is the majority or the minority, because the 10th schedule doesn't talk about that at all. Merger अलग चीज है. इस सब का एक exception है कि अगर 2/3 members of one party go and join another, तो उसको defection नहीं बोलते, merger बोलते हैं. पर वो चीज तो हुई नहीं है यहाँ पे. Now, if we talk about the Speaker of the Maharashtra State Legislative Assembly, इसको बार बार बोली जा रहे थे कि अरे take decision, take a decision, take a decision. So now he's taken a decision. He says nobody will be disqualified. खत्म बात. Right? वो 16 लोग जो शिंदे के फैक्शन में हैं वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, और वो 14 लोग जो ठाकरे के फैक्शन में वो भी नहीं डिस्क्वालीफाई होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कहते हैं कि इनको फिजिकली एक इंटिमेशन नहीं दिया गया था कि पार्टी ये करना चाहती है. व्हाट इज अ विप? अ विप इज एन इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स गिवन बाय अ पर्सन, बट पार्टीज अपने अपने मेंबर्स को इन लाइन रखने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए एक एक एल्डर मेंबर को, सीनियर मेंबर को एक विप बना देते हैं. एंड विप गिव्स इंस्ट्रक्शन सच एज अटेंड द मीटिंग, vote according to us, stuff such as that. So he says neither will the Shinde faction legislators will be disqualified, nor will the Thakre faction people. So कोई भी disqualify नहीं हो. अब ये इसने क्यों बोला? बड़ी सिंपल सी बात है. इसने 3 चीजों के बारे में बात की. एक है 1999 Constitution of the Shiv Sena, the leadership structure of the party, and the legislative party majority. So 1999 Constitution का क्या मतलब है? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक पेपर होता है, पेपर वर्क होता है, जिसके बेसिस पे वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है. कंपनी एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे काम करती है. इसी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है. सो 1999 शिवसेना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहते हैं दैट टेल्स यू द प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड विच इज द रियल पॉलिटिकल पार्टी. नाउ उद्धव ठाकरे सेज नहीं नहीं, हम 2018 वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमने अमेंड कर दिया, 1999 वाला, अब हम 2018 वाला कॉन्स्टिट्यूशन ही
सोचेंगे जिसके हिसाब से वी आर द रियल पॉलिटिकल पार्टी. बट राहुल नार्वेकर द स्पीकर सेज कि नथिंग डूइंग. 2018 वाला तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो completely flawed है, रिकॉर्डेड भी नहीं है, इसलिए वी विल बेस ऑल ऑफ आर डिसीजंस ऑन द 1999 वाला कॉन्स्टिट्यूशन. Now, long story short, what is the constitution saying, and why is it that Rahul Narvedkar has said that the Eknath Shinde faction is the real Shiv Sena? So, in 1999 constitution, they have said that the leadership structure will be decided how. It will be decided by the national executive. ठीक है. 2018 वाला जो संविधान है इस पॉलिटिकल पार्टी का, वो कहता है नहीं, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द पक्ष प्रमुख. अब पक्ष प्रमुख इज उद्धव ठाकरे, national executive is Eknath Shinde. All right. So Rahul Narvedkar is the speaker for Eknath Shinde. He says नहीं नहीं 1999 वाला देखो कि पक्ष प्रमुख से हमने नहीं बात करनी. और वैसे भी कहते 2018 में तुम्हारी पार्टी की कोई इलेक्शंस ही नहीं हुई प्रॉपरली, तो पक्ष प्रमुख कैसे अपने आप ही बन गया. तो वी डोंट कंसिडर दिस. वी विल कंसिडर द डिसीजन ऑफ द नेशनल एग्जीक्यूटिव. And that's exactly what Rahul Narvedkar says, that Uddhav Thackeray is the Paksh Pramukh, but he held that the Paksh Pramukh's power was not absolute and had to be exercised in consultation with the national executive of the political party. And so, hence, they have decided that it should be the Eknath Shinde faction actually is the real Shiv Sena, right? So there were a lot of things over here, guys. Things such as the post of a speaker, the name of the speaker, right? Anti-defection law, 10th schedule, of course, is anti-defection law. The difference between defection and a split, right? जब हम टॉपिक वीडियो करेंगे एंड पक्का करेंगे 10th शेड्यूल के ऊपर, इन केस यू गाइज वांट टू, एंड यू कैन टेल मी इफ यू वांट वन. एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट this very interesting case called Kihoto Holohan that talks about कितना समय में स्पीकर को डिसीजन लेना चाहिए, क्या ये समय डिफाइंड है, क्या नहीं है, क्या इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है. So a lot of interesting things from the topic, which is Indian polity. um, and that's all. That's a wrap for today's video. If you found this helpful, hit the like button, subscribe for more such legal insights, and don't forget to ring that notification bell. And yeah, that's all. Until next time, that is all from our end. Thank you very much. Keep studying.